Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and a very good afternoon to all of you. This is Uzma Khan. Let me briefly introduce myself to you. I've been working into the education sector for the past 17 years. I've worked in various capacities as an English professor at Babin Zikr University, as an English department, head of the English department at NCBNE. For the past 8 years, I'm associated with Oxford University Press as a regional head for the professional development department for the Central Punjab region. This was my brief introduction, and as we know, today's session is on student learning outcomes-based teaching and assessment. So we'll talk first about the objectives of the session. एक overview भी लेंगे. What is SLO? Because most of the times when I see this term, I find many answers to it. At times it's student learning outcomes, at times it's student learning objectives. So we're going to have the overview of both the terminologies. Then understanding the student learning outcome का framework क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे. Then student learning outcomes जो है, इसकी development और इसकी implementation cycle कैसे होता है और कैसे हम इसको मज़ीद effectively use कर सकते हैं in our own classrooms. So before we begin with the session, I have few questions to all of you, whoever is listening to me and watching the slides. आपका नाम क्या है? I want you to write down your name in the chat box. I want you to write down the name of your city in the chat box, your years of teaching experience and subject that you are teaching, and one thing that you like about yourself as a teacher. As a human being, we might like so many things about ourselves, but as a teacher, what do you think you like about yourself? That you're a hardworking teacher, you are a very good time manager. So if you can think in these lines. Again, I'm repeating, it's a short activity, ice-breaking activity, जिसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है chat box में. आप किस सिटी से पार्टिसिपेट कर रही हैं, शहर से, आपने वो लिखना है. आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है? इट कैन बी 1 month, इट कैन बी 1 year, इट कैन बी 10 years. आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं? Or one thing which you like about yourself as a teacher. Please share it in your chat box and let me see how many answers I'm getting. G. We have total 3 minutes for this activity. So please chat box में अपना नाम भी लिखें. कुछ बस bullets में लिखते जाएं. मुझे paragraphs नहीं चाहिए. नाम, शहर, year of teaching experience, subject, and any one thing that you like about yourself as a teacher. Okay, the very first one I get is from Sialkot, Gulerana. More than 10 years, English and math, dedicated towards my profession. Very nice, Gulerana. Then we have Aniza Shafiq, Aisha Anwar, Sonia Manzoor, Tehseen, Ikra. Okay, so this is the format I'm looking for, everyone. जैसे बिस्मा ने लिखा है, बिस्मा फीस है, लाहौर से है, 4 months teaching experience है, pre-class की teacher है, और creativity उनका एक strong element है as a teacher. So अगर आप लोग सब इसी नोयत के मुझे answers देंगे, I will appreciate that. English teachers, Anila Yasmin, Andalib, Junaid Hassan Qazi, 10 years, mashallah. Nida Shahzadi, Jampur, Mehak, Sialkot, 6 years English. Rosina, beautiful name, Rosina. Atak se participate kariye, 5 years experience unka, 7 to 8 months with my students, very nice. Sana from Sarai Alamgir, I hope I pronounced it right. Then we have Khurram Shahzad, Sharakpur, 10 years maths, impressive, IT professional. Asima, Nida Shahzadi, Tehseen, Urdu se hai, Sialkot se core participant hai, Aniza Shafiq from Lahore, 5 years experience, Islamic studies mein hai. Then we have computer science ki teacher bhi hamare paas hai, maths ke hain, Umme Habiba, Sialkot, 4 year, English creativity is the element, okay. Then we have Samra Hamid, Shamsa, 10 years of experience, Islamiyat Urdu, punctuality, very nice. Aisha from Sialkot, 4 years of experience, economics, 8 month experience, creativity and the element. Sana Majiz, I guess, yes. Asima, Ikra Shakur, preschooling. Farwa, Sialkot se hai.
Seerat Banu from Sialkot, आप मैथ्स भी पढ़ा, wow, that's really impressive, Seerat. आप मैथ्स भी करा रही हैं, biology भी पढ़ा रही हैं, physics भी पढ़ा रही हैं. And also running my academy in my area. Very nice. 7 years of experience in teaching from Samra. Shahidur Rahman, Sarai Alamgir, Gujarat, 10 years. Very nice. So I can see a variety of participants in here with numbers of teaching experience coming from the diverse background, educational and professional. Computer science. Sana again. 5 months preschool understanding, computer, Gujranwala, social studies and maths, politeness. This was Ikra Mushtaq. Then we have Jaberia, 2 years of experience, maths and English is our subject. Aniza from Hassan Abdal. By mistake, I write her. That's okay, Aniza. That's perfectly fine. Then we have Hafsa. Okay, all right. So this session is going to be a very interactive one because I will be requiring much of the answers and input from you. इसको मैंने एक typical monologue की तरह नहीं रखा. It is a bit interactive in a way कि कुछ activities होंगे, कुछ सवालात होंगे जो मैं आपसे पूछूंगी. तो आपने इसी तरह से मुझे बड़ा active response आपने देना है अपने chat box में. Thank you so much. I'll move on from here. Thank you everyone for giving the answers. Okay, so पीछे वापस जाऊंगी as the topic is student learning outcomes. Now again my question to all of you is student learning outcomes क्या समझ आता है आपको? आपके ख्याल में student learning outcome है क्या? कुछ भी whatever comes to your mind. मुझे यहाँ कोई सही गलत का डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए. आपके माइंड में जो कुछ भी आता है आप मुझे साथ साथ बताते थे कि आपके लिहाज से give me a 2-line answer, 1-line answer कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम से आपको क्या समझ आता है एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर, एज अ पर्सन, एज अ लर्नर, क्या समझ आता है? We have moved on to the other question, please. Student learning outcome से आपको क्या समझ आता है? Because I just want कि मैं पहले आपसे रिस्पॉन्स लूं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम कितना सही हैं. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का क्या मतलब है? उससे आपको क्या समझ आता है? कुछ भी whatever comes to your mind, just write it down. I think learn about students' mind, ठीक है. Develop knowledge, ठीक है. और क्या मतलब हो सकता है student learning outcome का? Students have learned at the end of our lesson. Yes, you're almost there. What else? But they have learned in the lesson. Very nice. और क्या हो सकता है? Student learning and implementations. Yes. Grasping of the knowledge, attaining power, getting output. Very nice. Understand the students and learn them according to their mind. How much students have learned? Student interest level. Yes. So somehow हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है. So let's see what the research says. Student learning outcomes, these are statements that specify what students will know, be able to do, or be able to demonstrate when they have completed or participated in a course or program. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो स्पेसिफाई करती हैं, बताती हैं कि स्टूडेंट्स को क्या आना चाहिए, क्या आएगा और वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे. हमने सीख तो लिया लेकिन क्या हम उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? क्या हम उसको एक्चुअली बता सकते हैं, वैसे करके दिखा सकते हैं अगर जब हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है? So these learning outcomes, they specify an action by the student that must be observable. जो लर्निंग आउटकम्स हैं ये वो एक्शन स्पेसिफाई करते हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं, जो आप विटनेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स के एक्शन के थ्रू, which is measurable to and able to demonstrate. And please remember, grades or objectives, student learning outcome, these are not objectives.
Student learning outcomes, as these are the statements that specify what students will know, be able to do, or be able to demonstrate when they have completed or participated in a course of a program. These are action driven by the students और ये observable होते हैं, measurable होते हैं और जो demonstrate किए जा सकते हैं. आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की. अब इसमें there are various degrees. डिग्रीज में लाइक लेसन का आउटकम क्या है, उससे आगे फर्दर हम करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिग्री लेवल आउटकम्स. डिग्री के नीचे प्रोग्राम्स आते हैं, प्रोग्राम्स के नीचे कोर्स आता है, कोर्स के नीचे लेसन आउटकम आता है. हम कोई भी सब्जेक्ट एरिया ले लें, एक एज अ होल सब्जेक्ट लें, तो उस सब्जेक्ट का कोई ना कोई आउटकम है, उस डिग्री का कोई ना कोई आउटकम है. उसके लिहाज से उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स के आउटकम्स हैं. प्रोग्राम्स को फर्दर आप सब डिवाइड करें, देयर इज अ पर्टिकुलर कोर्स, उस कोर्स का आउटकम है. Course leads to a particular lesson. So there's a complete division starting from the degree level, moving to the program level, then the course level and the lesson outcome. इसके एक और एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल एम इंग्लिश एक प्रोग्राम है, इट्स अ डिग्री प्रोग्राम, राइट. इसके अंदर डिग्री लेवल आउटकम्स में डिफरेंट आउटकम्स होंगे. उस प्रोग्राम्स के अंदर उस डिग्री के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे हर सेमेस्टर का एक डिफरेंट टाइटल है. उस टाइटल वो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंस, कम्युनिकेशन अलग आता है, पोएट्री अलग आता है, ड्रामा अलग आता है. वो फिर कोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. उन कोर्स को अचीव करने के लिए आपके लेसन के आउटकम्स होते हैं. सो इट्स अ कंप्लीट ब्रेकअप स्टार्टिंग फ्रॉम द डिग्री लेवल टू द लेसन आउटकम्स. Now, if अगर आप इसको गूगल करेंगे या सर्च करेंगे, you will come up with the two different terminologies. First, SLOs would be indicated as student learning outcomes, and at some places it would be indicated as student learning objective. So now, as teachers, as professionals, we need to understand the difference between these two terminologies. कि student learning objective क्या है और student learning outcome क्या है. Again, the question opens to all of you. What do you think is the difference between learning objective and a learning outcome? It's a bit tricky though, lekin I hope you can lead to the correct answer. So please write down your answer in the chat box. आपको क्या लगता है difference student learning objective का और student learning outcome का क्या है? दोनों में क्या difference है? We have 2 minutes for this. Student learning outcome और student learning objective में क्या difference है? आपके पास 2 minutes हैं. Think about it. कोई एक point बता दें, 2 points, whatever comes to your mind. Again, there is no restriction of being right or wrong. Whatever comes to your mind, please write it down in the chat box. Very nice. It is learning objectives. These are the purposes and the outcomes are the results. ठीक है? What else? और क्या difference हो सकता दोनों में? Gulerana says that objectives are what teachers set for students and the outcomes are the results of the student's progress. Yes. What else? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट का नॉलेज आ जाता है और लर्निंग आउटकम में उनकी इम्प्लीमेंटेशन जाती है. वेरी नाइस. Both terms are related to teacher, whether what he or she teaches and what he or she gains from the students in the form of the student's progress. ठीक है? What else? और क्या difference हो सकता है? Objective intention है और outcome is the understanding of the children. Or smart learning, yes. Or purpose from participation in an educational activity. So let's see how far right we stand. जो हम ग्रेड्स लेते हैं
किसी भी learning के बाद हम जो test assessment, these are the objective that we achieve. The learning outcomes, these are measurable and observable outcomes. How? जो लर्निंग आउटकम की कोर डेफिनेशन जो हमने अभी देखी थी, इट्स मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल और स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती हैं जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि स्टूडेंट को ये आना चाहिए और वो आने के बाद वो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए हमें. So well-written learning outcomes, it involves the following parts: action verb, of course demonstration के लिए action की जरूरत है, subject का content जो उसने सीखा है, फिर उसका level of achievement कितनी हद तक वो डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा है, उसकी भी वेरियस डिग्रीज होंगी. लाइक आपने एक चीज सिखाई, उस चीज को वो एज इट इज कर पा रहा है बच्चा कि नहीं, या उससे कम डिग्री में कर पा रहा है. देन द कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स इट्स एप्लीकेबल, like under what circumstances the child is trying to perform and demonstrate. So difference between objectives and learning outcomes. Objectives जो होते हैं, these are learning objectives of a topic. It is also a specific statement of teaching intention, जैसा भी हमारे एक participant ने बताया कि teaching intention है, which indicates one of the specific area that the teacher intends to cover. So objective एक intention है, teaching intention है, वो भी एक specific area की जो teacher intend कर रहा है. On the other hand, जो outcome है, ये it is also a statement, लेकिन of what a learner should know, understand, and be able to demonstrate. अब आप डिफरेंस देख रहे हैं, it's very clearly written in the red color. एक intention है और एक demonstration है. So, and there's a difference between these two, a very clear difference. आपने एक चीज को करने की intention की, लेकिन उस चीज की intention को complete करने के लिए you have to understand, you should be able to do that and demonstrate that after the completion of this learning process. Another difference is give information about what the teaching of the unit hopes to achieve. Objective में आप definitely अपनी intentions clear करते हैं, साथ साथ आपके objectives as a teacher क्या हैं जो आपने उस unit से achieve करने हैं वो आप बताते हैं. On the other hand, learning outcomes में वही जो intentions हैं, the learner is able to demonstrate after the course of instruction and the classroom transaction. So the main difference to the bottom line to understand and take away is objectives. These are the teaching intentions, hopes, and whatever you try to achieve from that particular topic or a unit. Outcomes, on the other hand, actual demonstration है जो measurable and observable है at the end of the course of instruction or the classroom transaction. In other words, learning objectives or learning learning outcomes में क्या difference है? जो learning objectives होते हैं, these are very broad in nature. Then the learning objectives, they are tied to instructor and the delivery of content, ये dependent होते हैं. उसके अलावा these are not easily measurable. On the other hand, the student learning outcomes, these tend to be specific skills or products which students are expected to learn. एक specific skills हैं, products के और product हैं जो students से expect किया जाता है कि वो सीखे और demonstrate करें जो observable है और ये measurable है. So again, a very simple distinction between learning objectives and learning outcomes is right in front of you. One is specific. It's tied to instructor delivery of content and not easily measurable. On the other hand, the outcome, it tends to be specific skill or the products of the students are expected to learn, and these are measurable. हमारी किताबों के अंदर is, even if you're teaching any subject, whether it's maths, English, science, history, geography, Urdu, English, कोई भी subject आप पढ़ा रहे हैं, at Oxford University Press, you will get all the learning outcomes very clearly mentioned in the beginning of every book, in the beginning of every chapter. For instance, ये मैंने page book से लिया हुआ है, जैसे unit 1 है message of kindness. अब उस unit के through आप जो learning outcomes है कैसे कैसे achieve करें, एक point आपको बड़े clearly elaborated way में मिलेगा. For unit 1 separately, for unit 2 separately, for unit 3 separately, for unit 4 separately. And this practice you will see everywhere in the entire book, in the entire series. So in case if you want to find out as teachers कि हमारे learning outcomes क्या होंगे इस unit को पढ़ाने के बाद, वो already आपको किताब के अंदर दे दिए गए हैं.
Now moving on to the second part of the objective, which is डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन साइकिल. हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं और इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन साइकिल इफेक्टिव वे में कैसे हो सकता है. I'll start this with the research. The research suggests that when the learning outcomes, when they are well written, clear, and measurable, learning outcomes can improve learning and motivate student engagement. अगर आपके जो outcomes हैं बड़े सही तरीके से लिखे हुए हैं, clearly लिखे हुए हैं और ये measurable हैं, मतलब these are practical. Actually, you can do them, you can observe them. So these measurable outcomes which actually improve the learning process and it motivates students and their engagement. Research also shows that these learning outcomes improve learning when they describe specific measurable takeaways too. Significance, हम बात तो कर रहे हैं, ठीक है जी, इस तरह से learning outcomes होने चाहिए और इस तरह से हैं. Significance क्या है? इसकी importance क्या है? Where does it actually help us as teachers and as learners for the students? So these learning outcomes, it helps faculty and students come to a common understanding about the purpose and goals of a course or academic program. By providing clear and comprehensive learning outcomes, faculty begin to provide a transparent pathway for student success. जब आपके learning outcomes clear हैं, and the students a great and clear pathway for the student's success. And the student learning outcomes, these include the characteristics of the students. Of course, आप जिस level को पढ़ा रहे हैं, वो भी important है. आपके academic goals क्या हैं? वो भी इसके अंदर include है. आपकी instructional strategies क्या हैं? To achieve those objectives, to achieve those outcomes. उसके बाद assessment, outcomes को understand करने के लिए, realize करने के लिए, mature करने के लिए आपको assessment की भी जरूरत है, जिसको हम आगे discuss करेंगे. And measurements of student growth are over time. Of course, how are you measuring this outcome? With what strategy are you measuring these outcomes? To understand the growth of the students over the time is also important once you implement student learning outcomes. The first step student learning outcomes बनाने के लिए it should be smart. कि आपके जितने भी outcomes हो, it should be smart. Smart stands for being specific. M stands for being measurable, A stands for being attainable, R stands for results oriented हो और T stand for the time bound हो. यानी कि जो student learning outcomes है, ये SMART का मॉडल वो फॉलो करें. स्पेसिफिक हो, बड़े क्लियर हो, वेल पुट हो, वेल रिटन हो, मेजरेबल हो, डेमोन्स्ट्रेटेबल हो. स्टूडेंट्स उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सके, आप एज टीचर्स उनको मेजर भी कर सके और उनको ऑब्जर्व भी कर सके. अटेनेबल हो, विद इन द टाइम लिमिट्स जो आपने दी है उसके लिहाज से आपने लर्निंग आउटकम सेट करने हैं तो अटेन भी हो सके. रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ऑफ कोर्स अगर आपने जो उनको सिखाया है वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे रिजल्ट एज पर द एक्सपेक्टेशंस, एज पर द desired level उसको आप attain नहीं कर रहे, it will not be a smart learning outcome and it should be time bound. Of course, you need to give them a time period. It cannot go on for years and years and years. कोई एक यूनिट है उसके आउटकम को अचीव करने के लिए आपको कितने लेसन्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने टाइम पीरियड की जरूरत होगी, कितना ब्रेकअप चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज हैं. It should be very much clear from the very beginning. Coming to the writing a good SLO. So these are the few points which will help you to write down good SLOs for your students. Creating an SLO is simple to start with. कोई difficult task नहीं है, होता ही आसान है लिखने के लिए, लेकिन it becomes a bit complex as you work into the details. So these SLOs can vary considerably depending on the district requirements. अगर कुछ जिस हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम है उसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये उस पर भी डिपेंड करता है. हमारे लर्निंग गोल्स क्या है, फिर हम असेसमेंट्स के मेथड्स कौन सा यूज कर रहे हैं, फिर हम कितना टाइम ले रहे हैं इनको कवर करने के लिए, ये जरूरी है SLOs को लिखने के लिए. Then also we should also keep in mind that these SLOs are created on special forms and templates. SLOs को create करने के लिए कुछ specific templates होते हैं, forms होते हैं, which have been developed to captain formalize the process, and these SLOs can be aligned. आपके जो स्कूल के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट गोल्स है उसके साथ आप अलाइन कर सकते हैं.
जिसके लिए आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स फॉर द फ्रॉम टीचर क्रिएटेड टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए एंड टू द स्टेट रिक्वायर्ड टेस्ट के लिए भी. Teachers have been planning lessons and developing units for many years, and these SLOs are a way to formalize that planning and focus on student learning outcomes. हम planning बहुत करते हैं, हम उनको to have a good outcome of the units. बहुत for many years we have been into this practice of the planning. जो outcomes हैं ये further आपको help करेंगे formalize करने के लिए उस planning को, ताकि हम focus कर सकें directly student learning outcome के ऊपर. So mastering SLO, it can be challenging, it can take time, but लेकिन उसके लिए आपको काफी study और practice की जरूरत पड़ेगी. उसके अलावा आपको school का support, district के जो goals हैं, and the professional development for the teachers and their evaluation and the training will be necessary for this. Moving on to the steps to writing SLOs. अब steps क्या हैं? हमने पहले बात की कि उसको create करने के लिए what are the good ways and good strategies to write the SLOs. लेकिन अब steps क्या है वो उसके ऊपर आ रहे हैं. So number one is, in one sentence, describe one major piece of knowledge, skills, attitude, value a student should gain by the end of a program. अब हमने जब SLOs लिखने हैं तो पहला step हमारा क्या होना चाहिए कि एक तो हमारा sentence जो है एक बड़ा specific हो, clear हो और वो describe करे one major piece of knowledge. कोई एक particular skill या attitude को और any value of the student जो student gain करेगा by the end of that program. Number two, action verbs हमें use करने हैं. मैं आपको example next slide पे दिखाऊंगी जिसके अंदर Bloom's taxonomy के अंदर create these SLOs. Number three, make sure that the knowledge, skill or attitude value can be observed and measured. ठीक है, हमने एक specific line देके to write on the to attain and describe the specific knowledge, skill and attitude जो students ने सीखना by the end of the program हमने वो बता दिया, हमने action word use कर दिया, लेकिन हमने make sure करना है कि जो knowledge और skill हम जो उनको लिख रहे हैं, जो बच्चों को आने चाहिए वो measurable भी हो, वो observable भी हो. So please consider what kind of evidence can be collected at the end of the process. Ensure, number four, ensure that outcome is clear and understandable to students. As teachers, we have to be very much clear first at our own pace कि हमने खुद कैसे clear होना है कि उनके हमारी क्या expectations हैं, outcomes हैं क्या. इसी तरह से हमने ensure कराना है कि हमारे जो learning outcomes हैं वो students को भी clear हो और students उनको समझें भी सही. These are the components, some of the components of the student learning outcomes जिसकी हम बात करें कि action verb होना चाहिए, product की बात हो, एक specific चीज हो उसके अंदर और conditions क्या हैं. So here you see the action verb में you have identify, construct, produce, analyze. So these are the vocabulary words which you can use to create SLOs. Product क्या हो सकता है? It can be the relevant database, whatever you are teaching them. A research question हो सकता है, कोई website हो सकती है. It can be global environmental factors हो सकते हैं. Condition क्या हो सकती है कि कहाँ हम इन SLOs को use कर रहे हैं? It can be for a term paper research. It can be used for the investigation purposes too, using primary archival resources. It can be used for most appropriate program. It can be used in terms of the effects on people too. So different vocabulary words, action verbs for the different products and the conditions applied. These were the Bloom's taxonomy common verbs which I talked about in my previous slide. With the help of these words, you can create your own SLOs, going from the lowest degree to the highest order thinking skills. Starting from knowledge and remembering. अब knowledge remember के लिए हमने कोई SLO कोई create करना है तो उसके लिए particular words क्या हो सकते हैं? You can start designing your SLO with the help of these words like define, list, recognize. Moving on, comprehension understanding के लिए हम क्या verbs use कर सकते हैं? Characterize करें, describe करें, explain करें, identify करें, locate करें, recognize करें, sort out करें. जो भी content information आप उन्हें सिखा रहे हैं with the help of the unit. एप्लीकेशन स्टेज के ऊपर, अप्लाइंग स्टेज के ऊपर हम जो SLOs क्रिएट कर सकते हैं with the help of these words, which is choose, demonstrate, implement, perform कर सकें बच्चे. Analysis and analyzing stage के ऊपर the words can be used as
एनालाइज करें इंफॉर्मेशन को, कैटेगराइज करें इंफॉर्मेशन को, कंपेयर करें इंफॉर्मेशन को और डिफरेंशिएट करें इंफॉर्मेशन को। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग स्टेज पे हम जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं व्हिच इज असेस, critique, evaluate, rank and rate. So students information को assess भी कर रहे हैं, critique भी कर रहे हैं, evaluate भी कर रहे हैं, rank भी कर रहे हैं, rate भी कर रहे हैं. Last part comes the synthesis and creating, the very important thing. जब हमने ये the first 1, 2, 3, 4, 5 parts को हमने execute कर लिया, then comes the last which is synthesis and the creating, where actually students they are creating something new. इनोवेटिव तरीके से कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं. ये सारी चीजें जब आप एसओलोस कोई भी क्रिएट कर रहे हैं, सो कीप इन माइंड ऑल दिस टर्मिनोलॉजी वर्ड्स along with the stages. It will help you to create SLOs as per the requirement. As I mentioned earlier, that make sure outcome is measurable. हमने बच्चों को जो पढ़ा दिया, सिखा दिया, अगर हम उसको measure नहीं कर सकते, तो हम उनको assess नहीं कर पाएंगे. For that very reason, make sure whatever outcome that you have designed so far with the help of the Bloom's taxonomy word that I just described, these outcomes must be measurable. अब जो not measurable है, उसका column अलग है, measurable का अलग है. पहले हम बात कर लेते हैं not measurable. You know the arguments, these are not measurable. Think critically, it's not measurable. आप बच्चों से कहें कि जी talk about these arguments, think करें critically, आप उसको measure नहीं कर सकते. Envision करने solutions को, again, it's abstract, आप envision नहीं कर सकते, आप इसको measure नहीं कर सकते. Understanding principle, understanding को आप measure नहीं कर सकते. You need to have a particular tool for this. Understand methods, उसको आप measure नहीं कर सकते. Appreciate करें, again, it's intangible, it's abstract, you cannot measure it. If you go to the measurable part, अगर आप जब बच्चों को कहेंगे कि समराइज करें आर्ग्यूमेंट को, that's measurable because वो आपको एक राइटिंग में कोई चीज दे रहे हैं. फिर अगर आप कहते हैं बच्चों को इंटरप्रेट करें, एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें, एविडेंस करें, कंस्ट्रक्ट करें आर्ग्यूमेंट्स को, जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट यूनिट आपने उनको पढ़ाया, दिस इज measurable. इलस्ट्रेट करें सॉल्यूशंस को, डेमोन्स्ट्रेट कर, इलस्ट्रेट करके पता है, इट कैन बी अ माइंड मैप, इट कैन बी एनी हायरार्की, इट कैन बी एनी चार्ट. जब इलस्ट्रेट करेंगे, अगेन दैट्स measurable. प्रिंसिपल जो उन्होंने सीखे हैं समझना, इट्स नॉट measurable, लेकिन जब उसको अप्लाई करके आपको सामने दिखाएंगे, दैट्स measurable. Methods, explicate करें methods, that is measurable. And choose to attend art even, that is also measurable because they're actually participating in that. So make sure whatever outcomes you have designed so far, these outcomes should be measurable. ये कुछ examples हैं जो आपको further help करेंगी to create your own SLOs, to understand SLOs and make your students understand the SLOs. For example, yeah, original column में आप देखें, it's written, students will know the historically important systems of psychology. On the other hand, जब हम इसको improvise करें, तो students will recognize and articulate. Practically, वो क्या कर रहे हैं? They are able to recognize and articulate the foundational assumptions, central ideas, dominant criticisms of the psychoanalytic, Gestalt behaviorist, humanistic, and cognitive approaches to psychologies. Similarly, original students will have the knowledge of engineering principle, but on the other hand, if you want to see these this information to be actually implemented, students should be able to apply and demonstrate the principles of engineering designs, formulating requirements and constraints, so on and so forth. So this is the example just to highlight and just to make the things in process easier for you. Okay, observable क्या है, unobservable क्या है, जो नॉर्मल हम आउटकम्स रखते हैं, लेकिन अगर उनको आउटकम्स को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, उनको मेजर नहीं कर सकते, तो उन आउटकम्स की अचीवमेंट वैसी नहीं हो सकती. उसके लिए एक चेकलिस्ट है, अगेन फॉर योर हेल्प, कि जो लर्निंग आउटकम्स आपने बनाए हैं उसके अंदर क्या आपने एक्शन वर्ब्स यूज किए हैं. उसके बाद एज स्टूडेंट्स टू अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड बाय प्रोड्यूसिंग समथिंग, जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, क्या वो उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ और. सिमिलरली एड्रेस स्टूडेंट कॉम्पिटेंसी रादर देन कंटेंट कवरेज. जो स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी है उसको एड्रेस करें, उसको फोकस करें. जो उन्होंने कंटेंट याद कर ले उसको नहीं, उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं उस पर फोकस करें. रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम. क्या स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस फंडामेंटल रिजल्ट को, जो भी प्रोग्राम, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने भी लिया है.
क्या स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ वर्क क्रिएट कर सकते हैं. देन द लास्ट वन, contain a piece of knowledge, skill or attitude value that observable and measurable. क्या जो उन्होंने सीखा है, any piece of information, any piece of knowledge, कोई भी skill, कोई भी attitude, क्या उसे हम उस skill को measure कर सकते हैं, observe कर सकते हैं. उसके लिए curriculum mapping आपको बहुत help करेगी. So before asking this question, do students know this? We need to ask, are we providing this experience, which is curriculum mapping, which can help determine degree of the coverage, a lot of coverage of the SLOs. और जो best practices हैं curriculum mapping की, it involves all the faculty. जब आपने SLOs determine कर लिए हैं, तो please you can ask each instructor to complete a curriculum map for the course. जो भी teacher पढ़ा रहा है, also, once the curriculum map has been drafted, you can share it with the entire faculty members of the same subject. Also, when the curriculum map has been completed, you can distribute it to all the faculty members in your institution. Students should have multiple exposure to the SLOs with the opportunities to practice. You have taught them about the SLOs, they have the understanding about the SLOs, but they should also give them ample opportunities to practice those SLOs. और फिर जब आप ये मैपिंग कर रहे हैं, उसके अंदर डेफिनेटली यू विल फाइंड सम गैप्स, तो उन गैप्स को जरूर एड्रेस करें wherever you see them. So that's the cycle. Which starts with कि आपने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स किए, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के साथ आपने करिकुलम मैपिंग की, फिर मैपिंग के साथ आपने मेथड्स ऑफ असेसमेंट डिस्कवर करने, डिस्क्राइब करने, डिजाइन करने. उसके बाद यू हैव टू गैदर द एविडेंसेस, उसके बाद यू गो टू द रिजल्ट्स, और रिजल्ट इन सारे प्रोसेस के अंदर फिर आपका असेसमेंट साथ साथ रिवॉल्व हो रहा है. So I'll just summarize the steps of creating an SLO. जब आप SLOs बना रहे हैं, just to summarize अभी तक हमने जो किया, कि आप प्लीज इंश्योर करें कि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स हैं कौन. Like every class is made up of individual learners with their own special characteristics. And this information at this point of time is very essential to developing learning goals and instructional practices. Step 2 में आता है कि decide करें on the length of time covered by the SLO. Is it the length of the course, a semester full year? जब आप SLO बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब तक cover होगा. ये पूरे कोर्स के लिए, सेमेस्टर के लिए, कंप्लीट ईयर के लिए है, कब तक के लिए है. क्योंकि often these SLOs cover a full course of study, but it may vary depending on the district or the situation or the organizational needs. Step 3 कहता है establish appropriate standards and content covered by the SLO. कि आप प्लीज एस्टैब्लिश करें एक कोई स्टैंडर्ड्स हो, कोई बेंचमार्क्स हो कि आपने ये कंटेंट जो है जो एसएलओ के थ्रू हमने अचीव करना कब तक करेंगे. स्टेप 4, चूज द असेसमेंट्स यू विल यूज टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग. आपने आउटकम्स तो डिजाइन कर लिए, अब उन आउटकम्स को मेजर करने के लिए असेसमेंट के कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन कौन से मेथड्स आप फॉलो करेंगे. प्लीज बी क्लियर इन दैट. Step 5, establish growth targets for students in cohort. अच्छा, इसमें ये आएगा कि that the students growth should be based, अब ये student growth है, ये based करती है baseline data के ऊपर, and it also has a pre-test and potential growth in learning. So please use a growth model that includes all students growth, not just the attainment of a single growth target, because when a target is used, it may not account for growth under the target or beyond the target. So establish the growth target for students at the cohort level. Step 6, the teacher develops rationale for the growth target using knowledge of the student, their circumstances, special needs of the content. जब आप ये develop कर रहे हैं, तो please be realistic and use and have this rationale for the growth targets. जो भी आपका knowledge है students के बारे में, उनके circumstances, कोई special needs है, कोई content है, इन सब को consider करके आपने करना है. Step 7, develop instructional strategies that will best support students in their learning. So you need to be specific in the instruction strategies जो कि student को support कर सके उनकी learning के ऊपर. So it's not just that just we are creating SLOs and we are just giving the timeline, but the basic, you can say the prime objective is to provide students this support in their learning. ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हम students को support provide कर सकें उनकी learning में. So this is the SLO cycle.
जो आप you can take away from here कि पहले it starts with define and refine, where the students learning outcome based on the input from the stakeholders. Then you're designing it, जिसके अंदर assessment tools आ जाते हैं, criteria आ जाता है, standards आ जाते हैं, which is directly linked to each outcome. Then comes the implementation step, where the assessment tools जो आपने gather किए हैं, it should be used to gather the evidence of the student learning. उसके बाद फिर analyze करेंगे and evaluate करेंगे जो भी आपने data collect किया. Fifth के ऊपर आप identify करेंगे कोई भी gaps आपको नजर आते हैं between the desired and the actual results. उसके अंदर gaps आएंगे initially, तो उन gaps को जरूर address करें. उसके बाद document करें जो भी results आपने अभी तक achieve किए हैं and outline whatever the change is required in the curriculum, instructional material or the teaching strategies. So ये cycle it will keep on repeating. Define से design, then implement, analysis के ऊपर फिर identify करें gaps और फिर उसको document करें. Gaps आएंगे, gaps को आप document करें, document करके फिर से एक नया refine करें अपना SLO और फिर से डिजाइन के ऊपर आए, फिर से इम्प्लीमेंट के ऊपर आए, and this cycle will keep on improvising. It's as per the requirement. Assessment के setting highest quality assessment, the other way of the assessment performance integral component of the student learning outcome. हमने outcome की तो बहुत बात कर ली, लेकिन outcome को measure करने के लिए हमें high quality assessments की जरूरत है. They should be able to measure the performance of the student, and this is a very integral component of the student learning outcome process. So assessment होती है, as we all know, there are two different types of assessment. One is the summative, other is the formative assessment. तो जो summative assessment है, वो तो आपका ongoing चल रहा है. वो किताब के अंदर जितने भी आपके questions, exercises हैं, that helps you cover the summative assessment, and then the affirmative assessment. And the summative assessment is the term-based assessment, which is at times given in the books and the workbooks midterms के लिहाज से, लेकिन आप अपना खुद भी इसको improvise कर सकते हैं. You can always take what is necessary. You can always amend it and change it as per your requirement, as per your interest. Of course, कि जो student learning outcomes हैं, this, please remember, it should not be described in an unmeasurable ways, and these should not be unmeasurable outcomes. Acquire an understanding or gain or an appreciation of understanding, appreciation, these are not measurable outcomes. So use verbs that imply measurement, जो verbs मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ. और जो कोर्स के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं वो बहुत जनरल भी नहीं होने चाहिए, and should be identifiable to a specific course, and should not be something that the average person would be able to perform. Everybody knows, for example, that the air pollution है, academic rigor है, it can be described in 6 major air pollution particles. लेकिन ये सब चीजें measurable होनी चाहिए. I'm just giving the basic examples of this. So you can have a roster, you can have this assessment description. उसके लिए आप rubrics भी design कर सकते हैं, scale भी design कर सकते हैं course और learning outcomes के लिए. फिर scores क्या होने चाहिए, score card आप design कर सकते हैं. फिर reflection question which can help you to fill in the gaps, और फिर से वही design, refine का, design का, implement का cycle repeat हो जाएगा. Framework for selecting the assessment. So this image before you is the framework which was developed for selecting assessment for the use in teacher in evaluating system. ये जो circle है ये represent करता है suggested steps for each stage of the framework, and the step highlighted in red जो आपको red में नजर आ रहा है, it is a very critical step of understanding what your current assessment data tells you what the students are learning. So with any assessment, it is critical that the educators should know how to interpret the scores from the assessment and the subsequent steps which is necessary for determining that an assessment can be used to inform teacher evaluation is important. So the number one is ensure alignment. इसके अंदर कोई high quality assessment होनी चाहिए which should be aligned with the learner's standard, curriculum and instructional resources. Number two पे है ensure assistant suitability. इसके अंदर high quality assessment होनी चाहिए is the one that yields reliable and measurable. हम high quality assessment क्या हो सकती है, जो reliable हो, meaningful information हो जिसके अंदर about what the students know and are able to do, and is scored using clear guidelines and criteria. Number three पे ensure growth, score accuracy and fairness. इसके लिए भी it should be a high quality assessment
which is the one that represents the range of where students should fall at the beginning and then at the end of a school year. Number four, ensure representation of teacher contribution. So a high quality assessment is the one which is sensitive to teacher instruction and is free of intentionality, which is related to the content. Number फाइव पे है implement effectively and appropriately. So जो आपकी high quality assessment है, it should be implemented fairly. जो fairly implement हो, consistent हो, and with fidelity to the guidelines developed by the course outline. So the arrows on the outside जो आप देख रहे हैं, these arrows outside represent the continuous process of evaluating and improving the overall teacher evaluation system. So these allies should use the data from the evaluation systems to determine if the evidence is providing useful information about student and the teacher performance. So they should also then decide if there's additional change that must be made to the system. So framework for the selecting assessment, this can actually help to ensure the high quality assessment which can yield reliable and meaningful information and the results. Why assess learning outcome? Student learning outcome assessment update. हमें इनकी assessment की outcomes की assessment की जरूरत ही क्या है in the first place? हमें जरूरत है क्योंकि this loud learning outcomes assessment it matters. State government भी आ जाती है इसके अंदर हमारे डिफरेंट जो टैक्स पेयर्स भी आ जाते हैं फैकल्टी आती है स्टूडेंट्स आते हैं एम्प्लॉयर्स आते हैं फेडरल गवर्नमेंट्स आ जाती है अब ये आउटकम्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ये मैं जनरल कैटेगरी में बता रही हूँ कि हमने आउटकम्स तो कर दिए लेकिन असेसमेंट की क्या जरूरत है सो द बेसिक बॉटम इंफॉर्मेशन इट मैटर्स टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स सो assessment is important. So that was all about the student learning outcomes. हमने उसके ऊपर बात की होती क्या है उसके बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है उसके बेसिक स्टेप्स क्या है उसका फ्रेमवर्क क्या है और हम इफेक्टिवली उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके डूज एंड डोंट्स क्या है so that was about the student learning outcome. Now we talk about the scaffolding. So before I start with scaffolding अब मैं आपसे फिर सवाल करूंगी कि scaffolding का मतलब क्या है आपको क्या समझ आता है scaffolding की so I'm going back. So people who were lucky enough to see the definition, good. But I would ask you guys what comes to your mind when we talk about scaffolding. जी scaffolding का क्या मतलब है स्कैफोल्डिंग हम बहुत टर्म्स सुनते हैं हर जगह स्कैफोल्डिंग होनी चाहिए स्कैफोल्डिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए क्या मतलब है स्कैफोल्डिंग का व्हाट इज स्कैफोल्डिंग anyone I hope you all can hear me I'm not talking to myself yes everyone out there scaffolding क्या होता है Hassan, can you hear me? Am I audible? Can you all hear me? Okay, all right. So I was asking scaffolding का क्या मतलब है? Scaffolding. हम ये लफ्ज अक्सर सुनते हैं during the pedagogy and everything.
स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, by supporting to teacher, yes, Rida, you're very much on the track. Temporary structures, yes. Structure building, yes. What else? Whatever comes to your mind, please feel free to write it down. Here, nobody's right, nobody's wrong. Shutter, okay. Structure building, yes. Brainstorming का फायदा ये होता है कि whatever comes to your mind, just jot it down, just write it down. Scaffolding से आपको क्या समझ आता है? Sport to children for learning, yes. Repair, yes. I like this word repair from Uzma Aslam, yes. Sobia Hashmi, yes, very well written. Motivating the students, yes. Uh-huh. Makeup, mm-hmm. Base, sport, repair. Okay, so let's see what scaffolding is. Scaffolding, बड़े simple words में इसको मैं इस तरह से explain करूंगी कि scaffolding is the breakup of the learning into chunks and providing a tool or structure with each chunk. When scaffolding reading, for example, you might review the text and discuss key vocabulary or chunk the text and then read and discuss as you go. Simply put, scaffolding is what you do first with the kid. So जो information, जो चीज आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, एक तो उसको chunk में divide करें, टूल प्रोवाइड करें, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें फॉर ईच चंक. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टेक्स्ट उनको दिया तो उससे पहले उसकी वोकैबुलरी डिस्कस करें, उसको रीड करें, उसको डिस्कस करें. जो भी बेसिक चीज तो इनिशियली आप करते हैं, यू कैन कॉल इट स्कैफोल्डिंग. What is scaffolding in child development? Scaffolding is how adults support children's development and learning by offering just the right help at just the right time in just the right way. जो भी सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को एज एडल्ट्स, एज टीचर्स, एज प्रोफेशनल्स, एज मेंटोर, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी लर्निंग के लिए, उस राइट टाइम पे जहां उसको उनको रिक्वायर्ड है, वहां on the right help in the right way is scaffolding. And scaffolding is typically demonstrated with older children, yet adults, the natural interaction of the infants and toddlers are scaffolding learning all the time. हम normally बच्चों को scaffolding हम demonstrate करके तो दे रहे होते हैं, उसके अलावा जब toddlers के साथ हम बात कर रहे हैं, उनको help provide कर रहे होते हैं time के time, वो भी scaffolding के umbrella में आता है. So some examples of scaffolding. Examples of scaffolding in education, हम क्या कर सकते हैं scaffolding के लिए कि जो information उनको पहले आती है, पहले तो हम उसको brainstorm करें, उनका prior knowledge हम assess करें, discover करें, उस prior knowledge को understand करने के बाद फिर उसके ऊपर आपने bridge build on शुरू करना है. Let's say you are introducing your students to a long division. अब long division के लिए उनको division ही नहीं पता, तो आप long division पे कैसे जा सकते हैं? Another example can be, let's say that you're introducing the types of past tense to your students. But if they do not know what a past tense is to begin with, you cannot talk about the types of past tense. So जो उनका current knowledge है, जो present knowledge है, पहले आपने उसको समझना है, उसको देखना है, फिर उसके ऊपर build on करना है. Another example, आप बच्चों को पिकनिक के ऊपर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पिकनिक का वर्ड ही नहीं पता, तो आप यूनिट उसके ऊपर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? So just try to understand what the picnic is, make them understand what the picnic word is, उनसे उनको पर्सनलाइज करवाएं, उनसे पूछें वो कभी पिकनिक पे गए हैं, कैसे गए हैं, क्या किया था. जब उनसे जिनको आता होगा जवाब, वो जब डिस्कस करेंगे, जिनको नहीं आता होगा पिकनिक का वर्ड, दे वुड अंडरस्टैंड, अच्छा बाहर आउटिंग पे जाना, इस तरह जाना, इसको पिकनिक कहते हैं. So they would start talking about too and start thinking on these lines.
So build onto the prior knowledge is one of the example that you can use in the scaffolding in your in education, in your classroom, no matter what subject you're teaching. Then present the problem and think out loud. कोई problem है उसको discuss करें as a whole class and think out loud and talk about it in all the directions. Repeat as necessary. आपको कहीं लगता है कि जो समझ नहीं आई है तो उसको रिपीट करें ताकि बच्चे उसको इमिटेट करें, उसको सीखें, डिफरेंट एंगल से सीखें और क्रिटिकली थिंक करें उसके ऊपर. Encourage participation. At times, what happens in most of the classroom, there are a few students who are the bright stars in the classroom. They talk about everything. They have all the information. And other children, they get so reluctant that they're very shy. They did not get the confidence. They're hesitant, reluctant to talk about, even if they know a bit information. तो एनकरेज करें पार्टिसिपेशन उन स्टूडेंट्स से भी जो बहुत कम बोलते हैं, जो बहुत शाय हैं, जब इनको बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उनको जितना भी आता है उनको इतना कॉन्फिडेंस से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें जिसमें वो बोलें. चेक अंडरस्टैंडिंग अगेन. पढ़ा दिया, कर दिया, डिस्कस कर दिया, अगेन अ वेरी क्विक recall or follow up the recap to understand what they have learned so far. So checking their understanding again. Ensure students can demonstrate knowledge. बच्चों ने जो पढ़ लिया, जो सीख लिया, उसको क्या वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो उसको भी इंश्योर करें. उसके अलावा देयर आर सम अदर scaffolding strategies which में जो आपने शायद कभी ट्राई की हो या ना की हो, but you can try them in your own classroom. And these are very awesome and very helpful strategies when it comes to student learning. इसके अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको show and tell. So show and tell is an activity. It's like जिसको आप कर सकते हैं. Like how many of us say that we learn best by saying something rather than hearing about it. कुछ students जो होते हैं वो सुन के ज्यादा नहीं सीखते इतना कि जितना वो देख के सीखते हैं. So modeling for students is a cornerstone of scaffolding. And as if I talk about my experience as a trainer, as a teacher, as a professional, जब आप बच्चों को जो चीज दिखाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना, उसको इंटरप्रेट करना उनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है. For example, there's an activity, try a fishbowl activity. इसमें क्या होता है कि we're a small group, in the center is circled by the rest of the class, and the group in the middle, or a fishbowl, they engage in an activity modeling how it's done for the larger group. You can always show students that the outcome or the project before they do it, if the teacher assigns a persuasive essay, या कोई inquiry-based science project है, or a model can be presented side by side with the criteria chart or rubric. You can also guide students through each step of the process with a model of the finished product in the hand too. So this is just one of the example of the show and tell. दूसरी example, tap into the prior knowledge, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ. इसके अंदर you can ask students to share their own experience with respect to the topic. उनके कोई hunches हैं, कोई ideas हैं, जो content, उस concept आप उनको पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चे कैसे relate कर सकते हैं, कैसे connect कर सकते हैं to their own lives. Also, you can sometimes you can offer hints or कुछ suggestions बच्चों को दे सकते हैं which can help them, leading them to the connections, or and once they get there, they will grasp the content on their own. So you can launch this in your classroom too. Number 3 पे मैं कहूँगी एक और example scaffolding की हो सकती है. Give them time to talk. As all learner needs the time to process the new ideas and information, they also need time to verbally make sense of and articulate their learning with the community of the learners who are engaged in the same experience and journey. So as we all know, कि जो structured discussions होती हैं, it actually works best with children regardless of their level of maturity. So if you aren't weaving in think and pair share, अगर आप think and pair share को सही तरह नहीं कर पा रहे, turn and talk, tried team, or some other structured talking time can be very helpful throughout the lesson, and you can also begin including the crucial strategy on a regular basis too. Third strategy scaffolding के ऊपर ये हो सकती है pre-teaching vocabulary. इसमें ये होता है कि आपने जो यूनिट बच्चों को पढ़ाना है, उसके पढ़ाने से पहले जो उसके अंदर जो उन्होंने बच्चों ने एनकाउंटर करने हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, उनकी मीनिंग उनको बता दें. मीनिंग बता भी दे, सिखा भी दे, और दोनों में फर्क है बताने और सिखाने में. So you're not just telling the meaning, the literal meaning, the dictionary meaning of the words, but you're also giving them the action words to the meaning too. So sometimes refer to the front loading vocabulary. This is a strategy which is very helpful for the teachers if you do not use enough. But many of us, and I have practiced it in my experience too, that when you make students
sit down and have this interactive session on the vocabulary learning by making them do the action words pertinent to the vocabulary, उनके लिए उसको आसान उसको understand करना बहुत आसान हो जाता है. Another example can be use visual aids. उसके लिए आप graphic organizers use कर सकते हैं, pictures, charts, which can serve as scaffolding too. So graphic organizers ये बहुत specific होते हैं, and it also helps children to visually represent their ideas, the organize information, and grasp concepts such as sequencing, cause, and effect. Another tip can be pause, ask question, pause, and review. And this is a wonderful way to check for understanding while students read a chunk of difficult text or learn a new concept or content. So ये strategy बहुत काम करती है जहां आप new ideas share करते हैं, discussion करते हैं उनके ऊपर जब वो read कर रहे होते हैं, फिर then you take a pause और उनको आप thinking time देते हैं और फिर then you can ask a strategic question, question पूछ सकते हैं उससे related, फिर pause ले लें again you're giving them time to think about it. So you need to design this question ahead of time. जब आप ये strategy use कर रहे हैं तो आपको पहले खुद से pre-plan होना पड़ेगा जहां आप ये strategies questions पहले से लिख रखेंगे. And please be sure कि ये बड़े specific questions होंगे, guided questions होंगे और open-ended questions होंगे. Similarly, kids, they get very engaged as it becomes very active for them, engaging for them, and they become active listeners by calling on someone to give the gist of what was just discussed. आपने बच्चे पे जब एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ आप बच्चों से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आप किसी को बुलाते हैं, कहते हैं कि इसके ऊपर बात करो, डिस्कवर करो एंड टॉक अबाउट इट, तो एक्टिविटी स्पैन, एक्टिव होने का स्पैन, एंगेजिंग स्पैन बच्चों का बहुत बढ़ जाता है. लेकिन अगर आपको लगता है कि if the class seems stuck on the question, so please provide opportunity to your student to discuss in pairs. So with all these diverse learners in our classroom, there is a strong need for the teachers to learn and experiment with new scaffolding strategies. I often say this to teachers कि इसको जरूर support करें, but at the same time they need to slow down in order to go quickly. Scaffolding is in a lesson may in fact mean that it takes longer to teach, but the end product is so far greater of quality and the experience much more rewarding for all who is involved in the entire process. Time लगेगा, लेकिन जो आपका rewarding process है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है. तो ये तो थी कुछ examples scaffolding की. स्कैफोल्डिंग आगे फिर कनेक्ट करता है आपको स्कीमा का. तो साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइंस में जो स्कीमास होते हैं, पैटर्न होते हैं थॉट के, बिहेवियर के, जो विच ऑर्गेनाइजेस कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप अमंग देम. इस एग्जांपल मैं आपको सिंपल तरीके से इस तरह से दूंगी कि जो हमारे माइंड के अंदर डिफरेंट स्कीमास हैं, स्कीमेटास बने हुए हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के लिहाज से. यानी कि इस टाइम इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे स्कूल पीरियड का स्कीमा अलग है, स्कीमेटा अलग है, मेरी यूनिवर्सिटी पीरियड का स्कीमेटा अलग है, प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो काम को स्कीमेटा अलग है, पर्सनल लाइफ का अलग है, फैमिली लाइफ का अलग है, फ्रेंड्स का अलग है, बैड मेमोरीज का अलग है, गुड मेमोरीज का अलग है. सो ये डिफरेंट स्कीमेटास हर इंसान के अंदर होते हैं. अब इन स्कीमेटास का जो बेसिक फंक्शन है, जो हम इसको यूज करके लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों के, तो इस तरह से है कि जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो कंटेंट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको कनेक्ट कर दें उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, उनके बैकग्राउंड नॉलेज से, तो उनका जो रिटेंशन स्पैन है वो काफी बढ़ जाता है. सो स्कीमा, इसके लिए जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज एंड सेंटेंसेस हैं, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस थिंग, आई एम रिमेंबरिंग दिस, आई हैव अ कनेक्शन टू, आई हैव अ स्कीमा फॉर, आई कैन रिलेट टू, आई ऑलरेडी नो. सो ये आपके डिफरेंट स्कीमास हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू वेरी क्विकली, अभी हम सब प्रोफेशनल लाइफ में है, इन आर डिफरेंट टाइम जोन्स, डिफरेंट एज ग्रुप में है, लेकिन आई बिलीव हम सारे प्रोफेशनल्स, हम स्कूल तो पढ़ चुके हैं ना, वी हैव क्रॉस दैट स्टेज ऑफ स्कूल एज, राइट. सो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपकी क्लास 5, सॉरी आई अगेन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन बाय मिस्टेक, आपकी क्लास 5 में आपकी फेवरेट टीचर कौन थी, मुझे उसका जवाब लिख के दें. क्लास 5 में आपकी फेवरेट टीचर कौन थी, कौन था, और क्यों थी या क्यों था. Who was your favorite teacher in your grade 5th? When you were in a school in grade 5th, आपका फेवरेट टीचर कौन था, कौन थी और क्यों थी. जल्दी से टेक्स्ट बॉक्स में लिखें प्लीज, चैट बॉक्स में.
क्लास 5th में आप लोगों की फेवरेट टीचर कौन थी, कौन था और क्यों थी, या क्यों थे वो? सर शहबाज, अंजुम, ठीक है। बायोलॉजी टीचर, क्यों? रीजन भी बताएं मुझे, जस्ट मेक इट वन वर्ड, टू वर्ड्स, बुलेट पॉइंट में एक छोटा सा रीजन बता दें मुझे। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द सेंटेंसेस, जस्ट अ बुलेट पॉइंट, दैट्स इट। नो पैराग्राफ्स, नो बिग सेंटेंसेस। अच्छा, इंग्लिश टीचर थी, अनीला थी, क्यों थी? रीजन भी मुझे बताएं। एक्टिविटीज में, ठीक है। शी वॉज लविंग, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, किसी की कोई ग्रेड 5th में फेवरेट टीचर नहीं थी? ये चले स्कूल में कोई भी फेवरेट टीचर थी, स्कूल की बात कर, जनरल। Disable right hand active, she always made me left hand. Okay, Khatib, because she's very honest to her word. ठीक है. Good behavior. क्योंकि उनका पढ़ाने का अंदाज अच्छा था, ठीक है. Very honest and hard work. Miss Naima थी because she was speaking softly and teaching method was so good. ठीक है. Chemistry reputation, ठीक है. जिनकी 5th में हो सकता है कि आपकी 5th में कोई भी फेवरेट टीचर हो, तो स्कूल में तो कोई आपकी टीचर होंगी ना। तो लेट्स फोकस ऑन द स्कूल। आपके स्कूल के जमाने में किसी भी ग्रेड में आपकी फेवरेट टीचर कौन थी? जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, प्लीज इसको आंसर करें। मैम शाहिदा जो अच्छे से समझा सकती थी, उनकी अटैचमेंट थी स्टूडेंट्स के साथ, नाइल एक्सप्लेन करते थे। मैम अफसाल, हर बिहेवियर वाज एक्सीलेंट। नसरीन वेरी नाइस। अच्छा, इंग्लिश बिकॉज शी इज वेरी लॉयल वर्किंग, ठीक है। Class bio teacher very polite. Okay, all right. अच्छा, अब do you see कि अब इस टाइम हम सब बैठे हैं with a lot of years of teaching experience, यूनिवर्सिटी भी पढ़े हैं, कॉलेज भी पढ़े, स्कूल को पढ़े, तो काफी टाइम हो चुका होगा, राइट? लेकिन आप लोगों ने, आई वुड नॉट इवन से 1 मिनट, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने वो इंफॉर्मेशन अपने स्कीमेटा से लेके इमीडिएटली इन फ्यू सेकेंड्स आपने मुझे लिख के दे दी। अब ग्रेड 5th में या स्कूल में आप कितने साल पहले थे, लेकिन उस फेवरेट टीचर की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए अपने माइंड से यू जस्ट टुक फ्यू सेकेंड्स। ये है बेसिक फिलॉसफी स्कीमा और स्कीमाटा की। जब हम बच्चों के साथ कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं उनकी इंफॉर्मेशन का, along with the personal along with the background knowledge उनके पास है या उनकी पर्सनल लाइफ के साथ, the attention span, the retention span, it increases a lot. So this is the benefit of joining the dots and creating a straight line. इसीलिए कहते हैं information straight line में दें, random dots में न दें, वो बिखरी रहती है। जब आप उसको connect कर देते हैं, तो उसको समझना, उसको याद रखना और उसको retrieve करना काफी आसान हो जाता है। So in other words, scaffolding is like, think about how this term is used in building history. And scaffolding is a temporary platform which is to provide support to students. एक platform हम provide कर रहे होते हैं with the help of scaffolding, जो students को support provide करता है. It helps people to get to a higher level that they cannot reach without support. तो स्कैफोल्डिंग हम वो सपोर्ट बच्चों को दे रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म वो दे रहे हैं जिसके बगैर वो अपना लेवल इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर बिलो लेवल बच्चा है वो एवरेज पे नहीं जा पाएगा, जो एवरेज है वो अबव एवरेज पे नहीं जाएगा। सो स्कैफोल्डिंग इज अ काइंड ऑफ अ थिंग, इज अ स्ट्रैटेजी व्हिच कैन बी यूज्ड एट एनी एज लेवल। These are the methodologies जिसके ऊपर मैंने आपको लिटरेचर बताया है।
जिसके अंदर यूज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज भी आता है कि जहां आपको लगता है कि आपके बच्चे यूनिट को नहीं समझ पा रहे हैं इन द टारगेट लैंग्वेज, यू कैन ऑलवेज यूज द फर्स्ट लैंग्वेज which can be the mother tongue, which can be Urdu language too. Reading aloud is another strategy. उसको मॉडल करके दिखाएं, उसको जेस्चर्स करके दिखाएं, करवाएं, ये भी आपको हेल्प करता है। स्कैफोल्डिंग की स्ट्रैटेजी है। इंटेंशनल स्मॉल ग्रुप, पार्टनर वर्क, आप पेयर वर्क भी करवा सकते हैं, आप स्मॉल ग्रुप करवा सकते हैं, पार्टनर वर्क करवा सकते हैं, ये भी स्कैफोल्डिंग की स्ट्रैटेजी है। स्टैंड स्ट्रक्चर एंड स्टार्टर्स, बच्चे जहां खुद से नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप उनको स्ट्रक्चर दे देंगे, कोई राइटिंग टेम्पलेट फॉर्मेट दे देंगे या सेंटेंस स्टार्टर दे देंगे, तो उनके लिए उससे बिल्ड ऑन करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली कोई आप कंपोजिशन करा रहे हैं, तो सेंटेंस स्टार्टर के साथ साथ, स्ट्रक्चर के साथ साथ, अगर मैं कहूँ कि आप उनको वोकैबुलरी बैंक भी दे दें जो उस टॉपिक से रिलेट करता है, तो उनके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा उसके लिखना। Then connect to the background knowledge. The information that children that they have so far, please connect to that background knowledge. Then graphic organizers. बच्चे ने जो सीख लिया है, अगर वो उसको पैराग्राफ में नहीं लिख पा रहा, उसका वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तो बना सकता है। उसका कोई ना कोई चार्ट, कोई ना कोई पोस्टर, कोई ना कोई उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका आप उसको दे सकते हैं with the help of these graphic organizers. Another strategy can be visual media. If they देखिए, at times we have students in our classroom with multiple intelligences. And to cater multiple intelligences, we need to come up with different set of exercises. And if I talk about our books of OUP, different and variety of exercises are given to cater all those multiple intelligent students. जिसके अंदर टिपिकल कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस भी हैं, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी हैं, जिसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं, स्क्रैबल्स हैं, गेम्स हैं, वर्ड पजल्स हैं, मैच द कॉलम है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, स्टोरी स्टार्टर्स हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, साथ साथ पिक्चर्स दी गई हैं जिसके अंदर बच्चे इमोशंस देख रहे हैं, नीचे स्टोरी स्टार्टर भी दिया हुआ, वोकैबुलरी बैंक भी दिया हुआ है। सो देयर आर मेनी वेज, मेनी स्ट्रेटजीज। अलोंग विद दैट पोस्टर्स भी बच्चे बना रहे हैं, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। Along with that, visual area, अगर बच्चे कोई चीज समझ नहीं है तो उनको उसके विजुअल्स प्रोवाइड करें, कोई उसकी वीडियो दिखा दे, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दे। ये सारी स्ट्रेटजीज हैं बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि बच्चे मूव ऑन कर सके अपने करंट लेवल टू अनदर लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, व्हिच इज अ बेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। So I hope scaffolding strategy is clear so far. So the teacher role is to take the student from known to the unknown. जो बच्चे जानते हैं हमने वो तो उनको कर दिया, जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको लेके वहां तक जाना है जहां बच्चे इंडिपेंडेंटली हर चीज खुद से कर सकें विद वेरी लिमिटेड गाइडेंस। इनिशियली आपने बच्चों को चीजें करवाई विद अपनी गाइडेंस के साथ, अपनी सपोर्ट के साथ, आपने सब कुछ करवाया। उसके बाद बेसिक एम, अल्टीमेट एम, द प्राइम एम should be is to take your children from the level where they are doing things with the aid to the level where they're doing things unaided, जहां उनको हमारी सपोर्ट की स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। For that very reason, differentiated instruction बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लास भरी होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं, अटेंशन स्पैन हर किसी का डिफरेंट होता है, किसी की लैंग्वेज एबिलिटीज डिफरेंट है, किसी का कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंट है। So differentiated instruction इन सब चीजों के लिए जरूरी है to cater all these different types of students. So scaffolding will help you with this. जब आपको पता होगा कि मेरी क्लास में किस किस डिफरेंट इंटेलिजेंस के बच्चे बैठे हैं, उनको मैंने कैसे कैसे कैटर करना है, तो scaffolding is the right tool to be used on the different sets of students. So the recap of what we have learned so far, done so far. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स से हमने शुरू किया था कि आउटकम्स होते क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, फिर आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या फर्क है। सो वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट। उसके लिए फिर लर्निंग टू राइट द गुड आउटकम्स वो क्या है, उसके क्या क्या स्टेप्स थे। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स के बाद वी टॉक्ड अबाउट असेसमेंट टू। असेसमेंट के अंदर हमने समेटिव असेसमेंट की बात की, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की, कोर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं वो कैसे होने चाहिए। असेसमेंट के अंदर हमने वी टॉक्ड अबाउट दैट मॉडल इन द शेप दैट वी टॉक्ड अबाउट कि हमने अलाइनमेंट को इंश्योर करना है, हमने स्टेबिलिटी हमारी असेसमेंट की होनी चाहिए, ग्रोथ, एक्यूरेसी एंड फेयरनेस हमारी होनी चाहिए असेसमेंट के अंदर।
उसके अंदर हमारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, हम इम्प्लीमेंट कर सकें इफेक्टिवली को, अप्रोप्रिएटली को, असेसमेंट को, वो भी होना चाहिए. So that was the recap of the assessment too. Then we talked about scaffolding. What is scaffolding? Why is it important? What are the different strategies? What is differentiated learning? How can we implement it in our classrooms? So student learning outcome, they reflect the vision and expectation the teachers have of their students. So your contribution as teachers is very vital in the entire process. चाहे वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो करिकुलम मैपिंग है, चाहे वो असेसमेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, उनका स्कोर कीपिंग है, उनकी आउटकम्स है, स्कैफोल्डिंग है, एवरीवेयर teacher is the key contributor to all this. So that ends with the question, teaching is a work of art. Last but not the least, please do not be deceived by the pirated books, because piracy and plagiarism both are crimes, and by the genuine books. So you can look at the new security label whenever you purchase an Oxford textbook or any supplementary reader. So labels with the features shown below is the proof of the genuine book. The image of the kite tune, it changes color from orange to green when you scratch it. Even you can see it from the different angles. उसके अलावा the logo for the Oxford Genuine book is the scanned QR code, which is a security label to verify if you have purchased a genuine book. So promote this word and to your to the other teachers as well, to the parents, to the students, to buy the genuine books and not the pirated books. Endorse it at your end too, and at the students level too. So with this, I open the forum for Q&A. So if you have any questions, any ambiguity, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो, the forum is open. Please feel free to ask me. Thank you so much, Ms Uzma. Definitely, it was a wonderful session. अभी हमारा Q&A सेक्शन शुरू हो चुका है, तो आप सिंपली रेज हैंड का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा, आप Let me उसको stop सिंपली sharing this Q&A. जी. आप सिंपली रेज हैंड के ऑप्शन को कर सकते हैं सिलेक्ट, ताकि हम आपको यहाँ से अनम्यूट करें. Raise hand. I can't see the raise hand. किधर है ये हसन? मैं इस पार्टिसिपेंट्स को आ रहा हूँ. पार्टिसिपेंट्स में गई मैं, ठीक है. पार्टिसिपेंट्स के साथ स्क्रीन शेयर के साथ वाला ऑप्शन होगा. ठीक है, आई गेट दैट. जी जी. रेज हैंड. ये तो अब मेरा ही आ गया ना. जी जी, अब पार्टिसिपेंट्स भी ऐसे ही करेंगे. जी, अब ठीक एक है. सिंपली. Okay. So do I have to tell this to the participants? जी जी, बिल्कुल. Okay. So, dear participants, the forum is open for the question and answer. Please feel free to put your questions in the chat box in the Q&A section, or you can raise your hand. Either option है raise hand का, so that we can take questions step by step from all the other participants. आपका कोई सवाल है तो रेज हैंड पे जाके इस ऑप्शन को क्लिक करें, so that we can see who wants to ask question. और फिर हम उनको स्टेप बाय स्टेप सब अटेंडेंट्स को हम क्वेश्चंस करते जाएं, उनके आंसर्स देते जाएंगे. रिदा हबीब, आपका रेज हैंड हुआ है, मैंने यहाँ से अनम्यूट किया आपको. अस्सलाम I वालेकुम. can't see the question. जी रिदा. अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम फ्रॉम दुआ कैंपस. वालेकुम अस्सलाम. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि इसकी फोल्डिंग के लिए आपने ऑप्शन था पहला कि आप जो है ना फर्स्ट लैंग्वेज अपनी यूज कर सकते हैं. तो काफी बच्चे जो हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, जो मतलब उनके घर में जो स्टार्टिंग से जो उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है दैट इज पंजाबी. तो क्या हम उनको पंजाबी में टीच कर सकते हैं? अगर वो नहीं समझ रहे, हमारी उर्दू लैंग्वेज नहीं समझ रहे या बुक की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, तो क्या हम उनको पंजाबी में भी पढ़ा सकते हैं? क्योंकि काफी कई स्कूल में ये रूल्स होते हैं कि आपने सिर्फ उर्दू ही बोलनी है या आपने सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी है, आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते. जी. अच्छा रिदा, इसके ऊपर मैं ये कहूंगी, एजुकेशन फिलोसफी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. अभी 10 साल पहले जो थी, जो इनिशियल वर्क, नॉट 10 years ago, इवन मच मोर बिफोर दैट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से हमने स्टार्ट किया था लैंग्वेज टीचिंग, कि इंग्लिश है, इंग्लिश को उर्दू में करे, उर्दू को इंग्लिश में करे. फिर हमने वी मूव्ड ऑन टू द डायरेक्ट मेथड, वेयर इट वाज एडवोकेटेड
कि आपने जो टारगेट लैंग्वेज सिखानी है बच्चों को, उससे वही लैंग्वेज यूज करके बच्चों को सिखाना। तो मैं इंग्लिश के अलावा एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर आपने बच्चों को फ्रेंच सिखानी है तो आपने पूरा लेसन फ्रेंच में कंडक्ट करना है और बच्चे फ्रेंच में बोलेंगे। सो कनेक्टिंग विद इंग्लिश, अगर आपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है, सिखा रहे हैं, तो पूरा लेसन आप इंग्लिश में कंडक्ट करेंगे और बच्चे भी इंग्लिश में उसको कम्यूट करेंगे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें काफी अर्सा चली। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड आया, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, जिसमें सारी इंग्लिश की एडवोकेसी थी कि दे टीच एवरीथिंग इन इंग्लिश, and I was a strong advocate of it too. Now the research which I'm seeing these days as a PhD scholar and a researcher, कि ये जो मॉडल था कि लैंग्वेज जो मदर टंग का यूसेज हम कर सकते हैं, इट्स कमिंग बैक अगेन। सो आई हैव सीन मैनी रिसर्चेस ग्लोबली जो कहते हैं, एंडोर्स करते हैं कि बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए आप उनकी मदर लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। सो इफ यू थिंक कि आप उनको डायरेक्ट सिंपल इंग्लिश, लेकिन अगेन गोइंग टू दैट पैटर्न, व्हाट यू कैन डू इज, अगर बच्चों को डायरेक्ट बुक इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो उसके कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाई डोंट यू फर्स्ट एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। बुक की इंग्लिश को अपने इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। उसके बाद अगर आपको लगता है उनको समझ नहीं आया तो आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बच्चों को समझाएं। समझाने के बाद क्विक असेसमेंट जरूर करें, क्योंकि सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ समझाना नहीं, हमने ये भी तो देखना है कि उनको एक पैराग्राफ जो पढ़ा है समझ में आया कि नहीं। अगर वो पहला पैराग्राफ ही समझ नहीं आया तो हम दूसरे पैराग्राफ पे कैसे जा सकते हैं? इट वुड बी अनजस्ट। फॉर दैट रीजन जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस पूछिए बच्चों से। अगर वो उनके आंसर्स करेक्टली कर रहे हैं तो प्लीज मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ। तो ये पैटर्न, ये स्ट्रेटजी आपने हर पैराग्राफ में रिपीट करनी है। इंशाल्लाह ताला आई हैव सीन इन मैनी स्कूल्स, ये टिप मैं हर जगह दे के आती हूँ, दे सी एंड आई गेट अ वेरी गुड फीडबैक कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बेहतर हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग 100% इट विल बी देयर, बट यस, इवन इफ इट्स 50-60%, प्लीज कंसिडर इट इज योर अचीवमेंट। I hope that this answers your question. Any other question, please? Ma'am, we have two questions in Q&A section. आप उसको देख के जो है वहाँ से आंसर करिए। Okay, how SLO basing can be effective at classroom level? मोहम्मद रेहान, SLO based जो टीचिंग है इफेक्टिव इसी तरह से ही होगी जब आप उसके आउटकम अचीव कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो आपने सेट कर लिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके आउटकम्स भी ऑलरेडी डिजाइन है। अब उन आउटकम्स को अचीव करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके रिसोर्सेज, आपका टाइम स्पैन, आपका लेसन, आपका प्लान, आपकी एग्जीक्यूशन काफी मैटर करती है। और इफेक्टिव करने के लिए जो चीज हम बार बार इसके ऊपर एंडोर्स करते हैं आउटकम में, कि वो मेजरेबल हो, ऑब्जर्वेबल हो, डेमोन्स्ट्रेटेबल हो। यानी कि बच्चे जो सीख रहे हैं क्या वो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर किसी एग्जांपल में हम अपनी किताबों से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, विच इज न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, जो आप लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें हर चैप्टर के एंड पे एक एक्टिविटी आती है विच इज प्रोजेक्ट मेकिंग, विच आई कॉल इट एविडेंस ऑफ लर्निंग। तो आउटकम आपको उनकी लर्निंग का बड़े क्लियरली वहां नजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन रेहान। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, हाउ टू sorry, this message just appeared, इसने सारा क्वेश्चन हाइड कर दिया। Okay, how to ensure its implementation at classroom level? क्लासरूम लेवल में अगर अगेन इफ आई टॉक अबाउट द बुक्स, किताब के अंदर मैंने आपको पेजेस दिखाए, आउटकम बड़े क्लियरली मेंशन्ड है, ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बड़े क्लियरली मेंशन्ड है। आप जब टीचर्स गाइड खोलेंगे उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना उसके लिए रिसोर्सेज, उसके लिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान, मॉडल लेसन प्लान, हर चीज उसके अंदर दी हुई है। तो जब उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर आप उसका आउटकम इन द शेप ऑफ द एविडेंस ऑफ लर्निंग जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको क्लियरली पता चल जाएगा बच्चे को कितना समझ आ चुका है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Q&A, then we have in the chat box, I guess. वह एसएलओएस को अप्लाई करने के बताएं प्लीज। बच्चों की स्ट्रेंथ जब ज्यादा हो तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जहां बच्चों की स्ट्रेंथ होती है ज्यादा, डेफिनेटली इट वेरीज इन अ वे। इफ आई हैव 12 children in my classroom and if you have 40 children in your classroom, definitely it will vary. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आउटकम्स अचीव नहीं कर सकते,
वेरी क्या करेगा, सिर्फ आपकी प्लानिंग वेरी करेगी कि हमने जो आउटकम्स को अचीव करने के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स सेट है, उसके लिए हमारे रिसोर्सेज वेरी करेंगे, उसके लिए हमारा प्लानिंग, हमारे स्टेप्स, हमारा जो हमने टाइम एलोकेशन दी है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, वो वेरी करेगा। लेकिन ये अचीवेबल है, यू कैन अचीव देम। उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन जो एज पर द रिक्वायरमेंट जो बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है, जो आपने खुद अपने स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो रिसोर्सेज सेट किए हैं, उसके लिए रियलिस्टिक रहे कि मैं जो कर रही हूँ और जो रिसोर्सेज मैं यूज कर रही हूँ, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव उससे अचीव हो जाएगा। जो टाइम स्पेंड मैंने 10 मिनट रखे हैं इस एक्टिविटी के लिए, क्या ये एक्टिविटी 10 मिनट के अंदर हो जाएगी। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन योर सेटिंग कि ये सारी चीजें करके मैं अपना ऑब्जेक्टिव, अपने इस आउटकम को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। वुड दैट बी रियलिस्टिक इनफ? तो ये सारी चीजें आपको बड़े केयरफुली और प्रैक्टिकली देखनी पड़ेंगी और प्लान करनी पड़ेंगी। ओनली देन यू कैन अचीव द डिजायर्ड आउटकम। Any other question, please? Any other question? अगर आप unmute करना चाहते हैं तो you can raise your hand and Hassan will unmute you and you can speak your question, or you can write down in the Q&A section or the chat box, whatever is convenient for you. Any question, anything जो आपको समझ नहीं आई हो, कोई ambiguity कुछ पूछना चाह रहे हैं, please feel free to do that. As we have 2 classes in 45 minutes, so how we will manage? 2 classes in 45 minutes? I'm sorry रिदा, मुझे समझ नहीं आया ये सवाल कि 2 क्लासें 45 मिनट्स की हैं या आपके एक लेसन 45 मिनट्स का होता है, फिर एक और लेसन 45 मिनट्स का होता है। Apologies, I'm unable to understand these questions. If you could make it easier for me. आप कहना क्या चाह रही हैं? Each class of 20 minutes. Oh, this is very short time, I must say. 20 मिनट के लेसन में तो डेफिनेटली फिर आप बहुत कम चीजें ही करा पाएंगे. Again, given the number of students that you have in your classroom, it's going to be very challenging. Average students के लिए कौन से स्टडी एक्सपेरिमेंट बेहतर रहेंगे? जो किताबें लिखी जाती हैं उसके अंदर ये सारे स्टूडेंट्स को अंडर कंसिडरेशन रख के लिखा जाता है। ये सारी एक्सरसाइजेज सबके लिए डिजाइन होती हैं, चाहे आपको बिलो एवरेज स्टूडेंट है, एट एवरेज स्टूडेंट या अबव एवरेज स्टूडेंट है। So all the exercises given in our book, they automatically cater to the different abilities and different levels of students. सिलेबस के हवाले से भी बताएं कि ज़्यादा हो तो इजी वे से हम क्या करवाएं, बताएं प्लीज. If I talk, if as I'm representing UP Oxford University Press, if I talk about our books, तो I would suggest कि आप कुछ भी skip ना करें, आप उसको as it is execute करें, लेकिन yes, आपको उसके लिए प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी और प्लानिंग भी रियलिस्टिक प्लानिंग करनी पड़ेगी. नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन डिफरेंट स्कूल्स 40 to 45 मिनट्स का एक लेसन होता है और ये अच्छा एक टाइम स्पैन है एक लेसन को शुरू करने के लिए, वोकैबुलरी सिखाने के लिए, एक दो पैराग्राफ सिखाने के लिए एक यूनिट जो स्टार्ट करते हैं. एंड वन यूनिट कैन टेक एटलीस्ट 5 to 6 लेसन्स डिपेंडिंग के लेसन है कितना लेंथी. जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारी नोटबुक पे कराने वाली नहीं है, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ मैच द कॉलम्स हैं, कुछ करेक्शन हैं जो देर एंड देन बच्चों ने करनी, तो वो सारी चीजें तो किताब पे हो सकते हैं जिसके ऊपर आपका काफी टाइम बच जाता है. कुछ सवाल हैं जो नोटबुक पे बच्चों ने करने होते हैं, वो बहुत कम ही है. इवन जो राइटिंग की कॉम्पोजिशन है वो भी राइटिंग फ्रेम्स, राइटिंग टेम्पलेट्स किताब के ऊपर ही दिए हैं, बच्चे ने उसको एज ए मॉडर्न लेसन, मॉडर्न राइटिंग टेम्पलेट को देख के उसी के अंदर उसको फिल करना होता है. सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम देयर. So syllabus breakup becomes really easy in that sense. Any other question, please?
Any other question, any suggestion, any recommendations? कोई और सवाल, कोई और चीज आप पूछना चाह रहे हो, डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई चीज आपको क्लियर ना हो, आप दोबारा पूछना चाह रहे हो, प्लीज फील फ्री टू डू दैट. जी आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको यहाँ पे एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम उज़्मा आपका कि आप इस सेशन के लिए आपने टाइम दिया। तो मज़ीद अगर कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो लास्टली हम इसको देख सकते हैं। Gee, any comments from you guys, participants? If you have any comments, any recommendation, any suggestion, please feel free to write it in the chat box, or you can always raise your hands. We can unmute you and you can speak about it. So whatever is convenient for you guys, please do that. So at the end, I would just say that SLOs, whether it's objective or outcome, this is a very significant thing, a very significant matter to every organization. And when we set it, uh, it should be measurable, it should be observable, and it should be practical enough. बस आपने बेसिक जो बॉटम लाइन ये कहूंगी कि किताबों के अंदर आउटकम्स वैसे भी दिए होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी दिए होते हैं. एज टीचर्स आप प्लीज कोशिश ये किया करें कि आप अपना टीचिंग स्ट्रैटेजीज, मेथडोलॉजीज, पेडागोजी इतनी इंगेजिंग रखें, इतनी रेलिवेंट रखें कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स, उन आउटकम्स को बड़े एक्यूरेटली और अच्छे तरीके से एक अच्छी परसेंटेज पे अचीव कर सकें. हो सकता है गैप्स कैन बी देयर जहां आपको आउटकम्स एज पर योर डिजायर्ड आउटकम ना मिले, लेकिन उसके लिए फिर आप अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं. फॉर्मेट इन अ वे कि आप उसकी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेज चेंज कर सकते हैं, टाइम एलोकेशन चेंज कर सकते हैं. बिकॉज बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एज टीचर इज टू मेक श्योर दैट द लर्निंग शुड टेक प्लेस. आउटकम का फायदा ये हो जाता है कि सिर्फ रटा नहीं होता है, actual evidence of learning हमारे सामने आ जाता है in many ways, in many shapes. For that very reason, please be proactive. Start enjoying your teaching. The more you enjoy your teaching, trust me, your students will enjoy a lot. वो ज़्यादा engage होंगे, वो ज़्यादा involved होंगे. I have derived with this equation the level of learning, जो मैंने अपनी research से खुद निकाला है, the level of learning is directly proportional to the level of engagement. The level of learning is directly proportional to the level of engagement. No matter how many resources, gadgets, tools that you use in your classroom, if your students are not engaged, learning will not take place. On the other hand, if you have no resources, if you have no gadgets, if you have no tools, and the student is completely hooked up by the teacher, totally absorbed in the teacher's voice, in discussion, communication, learning will definitely take place. So the basic जो हमारा role है as teachers in the classroom is to ensure that the learning should take place. और उस लर्निंग को टेक प्लेस कराने के लिए आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये चीज और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी हेल्पफुल रहती है. आप जितना प्री प्लान होंगे कि आपको पता है कि मैंने नेक्स्ट जाके क्लास में क्या कराना है, कैसे कराना है टू अचीव, टू हैव दिस आउटकम एट द एंड ऑफ द लेसन, उतने ही आपके लिए टीचिंग आसान होगी, उतने ही आपके लिए चीजें प्रिपेयर करना आसान होगी, उतने ही आपको डिजायर्ड आउटकम मिलेंगे. So that's the basic bottom line suggestion from my side. I wish you all the very best of luck in your personal, professional, and academic life if you're a student somewhere, and wish you every best and every success in everything you do. Thank you so much, and Allah Hafiz from my side. Hassan, am I good to go now? जी जी, यू मे गो नाउ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।